Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 30 and 31st of March. The session will be quite interesting and important, students, so stay tuned with us till the end. In this video students, we will be talking about 5 years of National Technical Textile Mission. Next thing, we will be talking about Ministry of Defense. They have signed 2 contracts. What are the contracts for? We will be discussing it. Then the 14th edition of India-Russian Naval Exercise Indra, we will be discussing in which Indian naval ships took part in this exercise from India. We will be discussing it, and we will be talking about that Ministry of Finance. They have retained the small saving scheme interest rate for the first quarter of FY26. We will be discussing about the rates also. So there are many more news apart from this, students, in this video. So stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and if you haven't shared this video yet, also share this link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Start with national affairs. 5 years of National Technical Textile Mission has been completed recently, right? And it was based on weaving the fabric of innovation, right? So recently, this National Technical Textile Mission, that is NTTM, this mission, this is a flagship initiative of the Ministry of Textile that was launched in 2020. The aim of this mission was to boost the textile import-export in India, right? That means to grow the textile sector in India. Right now, 5 years has completed of this successful implementation of this mission, correct? The focus here is doing research, development, market growth, export and skill development. Also remember, the aim of this mission is to also help the startups and use agriculture, infrastructure, healthcare to help them grow, right? Take a note of it. Then there are 4 key components of this mission, that is research, innovation, development, promotion and market development, export promotion, and education, training and skill development. Apart from one more thing, remember, India is the world's 6th largest exporter of textiles with a 3.9% share in the global textile export. And the textile industry contributes approximately 2% of the country's GDP and accounts for 10% of the industrial production. Moving on. Next, Ministry of Defense, they have signed 2 contracts worth 62,700 crore rupees with Hindustan Aeronautics Limited for the supply of 156 light combat helicopter Prachand to the armed forces. So, first thing, remember, it is Ministry of Defense. They have signed 2 contracts. These 2 contracts are with Hindustan Aeronautics Limited, right? That is a Navratna CPSC under the Ministry of Defense, and it is for the supply of 156 light combat helicopter Prachand, right? Second contract here is for the training equipments, right? And the total cost of them will be coming out to be 62,700 crore rupees excluding taxes, right? So here you can see Ministry of Defense signed 2 contracts with Bengaluru, Karnataka based Hindustan Aeronautics Limited, that is the Navratna, and it is for supply of 156 indigenous, that is made in India, light combat helicopter Prachand, as well as training and associated equipment for the total cost of 62,700 crore rupees. Moving on, if we talk about Hindustan Aeronautics Limited, students, it is a Navratna, first thing. Second, who is the chairman and managing director here? Dr. D.K. Sunil.
and headquartered in Bengaluru, Karnataka, established in 1940. Next is 14th edition of Indian-Russian naval exercise Indra has commenced off. Right, so two questions that are important, that which edition, second it is held between which two countries, and one more question, third, the location where this exercise is being held. So it is held off the coast of Chennai, Tamil Nadu. Right, next thing the question important becomes is, where was the 13th edition of this exercise was held? It was held in Bay of Bengal. Right, next question is, in which two phases this exercise is held? It is held in harbor phase and sea phase. And third question is that from Indian side which naval ship took part, and from Russian side which naval ship took part. So from Russia it is Rezki Pechanga, these two took part, and from our country India it is INS Rana and INS Kuthar. These are the two took part, along with maritime patrol aircraft PATI. Right, next is Ministry of Finance. They have retained the small saving scheme interest rate for the first quarter of FY26. Let me show you the direct interest rate. For post office saving deposit 4%, for 1 year 6.9, 2 year 7, 3 year 7.1, 5 year 7.5, and 5 year it is 6.7. Then for Kisan Vikas Patra 7.5%, Public Provident Fund 1.1%, Sukanya Samriddhi Yojana 8.2%. Next, students, we are talking about growing MSME's digital transformation, right? So recently NITI FTH, this is your NITI Frontier Tech Hub of NITI Aayog only, they have collaborated with CII, Confederation of Indian Industry, that comes under the Ministry of Commerce and Industry, and AICTE. So three organizations, 1, 2 and 3. They have together launched the DX Edge for MSME Digital. What is this DX Edge? It is your Digital Excellence for Growth and Enterprise initiative. The aim of this initiative will be to help the MSMEs with the digital tools, with the digital knowledge they require, the ecosystem they require to enhance their efficiency, revenue and global competitiveness. Right? So this DX Edge initiative led by CII will get support from NITI FTH and AICTE. It will help MSME tackle technology, workforce and certification challenges by linking academia with industry, providing hands-on training and enabling the global market access through digital certifications. If we talk about CII, Confederation of Indian Industry, who is the Director General here? Chandrajit Banerjee, headquartered in New Delhi, founded in 1895. Next is NITI Aayog. NITI Aayog has launched the second edition of Trade Watch Quarterly for the second quarter of FY25. So Dr. Arvind Virmani, the member of the NITI Aayog, has released here the second edition of this Trade Watch Quarterly publication. And this edition, it represents a detailed analysis of India's trade position, and it also offers key insights into the textile sector. If we look into the data, India's total trade grew by 5.67% to $839 billion during April to September 2024 compared to the same period in 2023, where exports rising by 5.23% to each $395 billion and import increasing 6.07% year on year, which reached to $445 billion. That means here you can see the imports are more, exports are less. Right? Take a note of this. Apart from this, the merchandise trade deficit with free trade agreement partnered climbed to $26 billion. Next, and which is the India's top export destination? USA, UAE, Netherlands. These are the India's top export destinations. Next is Indian Army has conducted Prachand Prahar exercise with high altitude Himalayan terrain. So direct question, it is Indian Army that was in partnership with Indian Air Force and other branches of the Indian Armed Forces. They have carried out an high intensity exercise, that is exercise Prachand Prahar, in the high altitude terrain of Arunachal Pradesh, and this exercise started from 25th to 27th of March under the Eastern Command to enhance joint operation capabilities of the Indian Armed Forces. Next is banking and finance. SEBI has issued new guidelines for intraday index derivative monitoring effective from 1st of April 2025.
5. These new guidelines will be monitoring the intraday position limits for the exchanges and clearing corporations. SEBI has also clarified that no penalties will be imposed for breaching existing position limit during the trading day until further notice. And also SEBI proposed new proposition limits for index derivatives to better reflect actual market leaks. For index option, the each at the end of the day limits are set at 500 crore rupees and 1500 crore rupees, while the intraday limits are set for 1000 crore rupees net and 2500 crore rupees gross. Whereas for future index, the end of the day limit has been increased from 500 crore rupees to 1500 crore rupees with an intraday limit of 2500 crore rupees. Next is RBI. They have allowed the standalone primary dealers in repo observations. I repeat, recently SEBI, that is Mumbai Maharashtra based SEBI, they have allowed they have permitted standalone primary dealers to participate in all repo operations across tenures. This will remove the previous restrictions that limited their role primary to overnight liquidity management. This will exclude the marginal standing facility and selectively in long-term variable repo operations. Here, RBI's decisions will allow these standalone primary dealers easier access to funds, aims to manage liquidity and address the ongoing shortage as the financial year ends. Right? This will enhance the liquidity. Right? This will provide them overnight liquidity management. That is important here. Right? The focus will be on providing overnight liquidity management. Right? Next is SEBI has granted in principle approval to Ask Group for mutual fund business. I repeat, this Ask Group that is backed by Blackstone Incorporation, right? They have recently secured in principle approval from Mumbai Maharashtra based SEBI to launch their own mutual fund business. Direct question, students. Next is Mobivic. They have launched MSBPL. Mobivic, this is a prominent fintech company, and they have expanded their financial service portfolio by incorporating a wholly owned subsidiary, Mobivic Securities Broking Private Limited, following the approval from the Ministry of Corporate Affairs. Right? And here Mobivic has set up a paid up share capital of 1 lakh rupees for MSBPL and plans to invest additional 2 crore rupees in the phases. It will function as a securities brokering firm with subsidiary focusing on trading shares, stocks, securities, debt instruments, commodities, currencies and derivatives. Right? So Mobivic, they have launched this Mobivic Securities Broking Private Limited as a wholly owned unit for stock broking and investing. Next is SBI Chairman Challa S. Sethi, right, has been elected as the chairman of IBA, that is Indian Banks Association. So CS Sethi has been elected as the chairman of IBA, that is Indian Banks Association. He is currently the chairman of SBI, right, and he will be in this position of the chairman of IBA for 25-26. Correct? Very important. Take a note of this. He will be succeeding whom? He will be succeeding Matam Venkata Rao. He will be succeeding Matam Venkata Rao. Right? Next is SRMB. SRMB, it is your SRMB Srijan Steel Private Limited. Right? They have appointed Rohit Sharma, as you can see him in the picture, very famous cricketer, as their brand ambassador. Right? Also, Rohit Sharma joins the former Indian World Cup winning captain Mahendra Singh Dhoni and Kapil Dev, who are also the endorsers for SRMB Steel. Correct? Next is Ambuj Chandana has appointed as the Managing Director and Head of Consumer Banking Group at DBS Bank India. I repeat, recently DBS Bank India has appointed Ambuj Chandana as the new Managing Director and Head of Consumer Banking Group. He replaced Prashant Joshi, who has joined DBS Bank. Correct? Take a note of this. So Ambuj Chandana has been appointed as the MD, Managing Director and Head of Consumer Banking Group. Next is acquisitions and mergers. Utham Investment to acquire Sidbi's asset reconstruction company arm for 260 crore rupees. Right? I repeat, that is NBFC, Utham Investment and Infrastructure Limited. They received the approval from RBI to acquire 79.28% stake in India SME Asset Reconstruction Company Limited
and they will be this asset reconstruction company that is sponsored by Lucknow UP based SIDBI, and they will be acquiring this much stake, 79.28% stake for 260 crore rupees here. Next is science and technology students. Indian Army has successfully tested the India's first kamikaze FPV drones with kamikaze anti-tank munitions. What is FPV? FPV is your first person view, right? That an individual will be able to handle these drones sitting at an office, right, remotely, correct? So these are the kamikaze drones. Kamikaze means they can go and attack, they can do a blast somewhere, right? So Indian Army, they successfully tested India's first kamikaze first person view drones with kamikaze anti-tank munitions, right? And they can take out the tanks also. Where these drones was tested, they were tested at Pathankot in Punjab, right? And it is a first of its kind project designed for precise strike against the armored vehicles. And here each of this drone will cost around 1.4 lakh rupees. Next is ISRO successfully tested the semi-cryogenic engine and electric propulsion thruster. These are tested, right, at the ISRO's propulsion complex in Mahendragiri in Tamil Nadu, and this successful test paves the way for launching the Mark 3 LVM3, correct? This will enhance the payload capacity as a better thrust will be provided here, and it is our ISRO, they have achieved this milestone by successfully testing this engine powered head test article for liquid oxygen, right? That means liquid oxygen will be used here as a fuel, correct? Take a note of this. Just remember the name. What is the name? It is SE2000 semi cryogenic engine. Next students, BEML, that is Bharat Earth Movers Limited, they have unveiled indigenous 12 by 12 high mobility vehicle for defense sector, right? Directly remember this, that BEML, they launched their indigenously designed and manufactured high mobility vehicle 12 by 12 at its Palakkad, Kerala complex, developed for Vehicles Research and Development Establishment, a unit of Delhi based DRDO, right? Next students is important days. We are talking about World Piano Day. This year it was observed on 29th of March. Generally this day is observed on the 88th day of the year, right? Generally it falls on 28th or 29th of March depending upon leap year or not leap year, right? Why 88? Because there are 88 keys in piano. These are 88 keys, correct? And this day celebrates the piano, an acoustic keyboard stringed percussion instrument that brings musicians together, right? In 2024 it was 28th of March. In 2026 it will be 29th of March. Next is International Day of Zero Waste, observed on 30th of March. This day is observed to create a need for managing global waste, right? To proper waste management, also promoting sustainable consumption and production patterns to combat the waste pollution crisis. This year it was the third edition of the International Day of Waste that was observed. Then there is a theme also towards zero waste in fashion and textile. This is the theme, students, that you all need to remember. And in today's video you must have seen that we have focused on textile sector to grow and to help the textile sector grow economically and sustainably, right? So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning, and then we will be proceeding to the homework section. Next, identify the organization that extended a 2000 crore rupees loan to Gramercy Tech Park Private Limited for establishment of 120 megawatt data center in Maharashtra. It is National Bank for Financing Infrastructure and Development, and this will be worth 120 megawatt data center in Maharashtra. Next, in Feb, Beacon launched India Bill Pay, a service that allows the non-resident Indians in Canada to pay bills directly in India through the Beacon Money application. Next, and one more thing, remember, similarly if we say in order to enhance the usage of UPI in Singapore, the company from Singapore that has partnered with NIPL, that is NPCI International Payment Limited, is your HitPay, is from Singapore. Next, RBI revealed that its digital payment index has increased to 465.33
reflecting a 11.11% year-on growth as of September 2024. Next, what are the new norms introduced by SEBI in Feb 25 to regulate the algorithmic trading for retail investors set to take effect from? It will be coming into effect from 1st of August 2025. Next, which of the following states recently secured 2,424.28 crore rupees from the World Bank to improve the living standards? It is Kerala state. Next, which bank launched an exclusive set of banking products and services specifically for senior citizens in Feb 2025? It is IDFC First Bank. Next, identify the new health insurance product that was launched by Bajaj Allianz General Insurance, designed exclusively to cater to the evolving healthcare requirements of the women. It is Horizon Care, right? Take a note of this. Next, how much net profit of State Bank India reported for the third quarter of FY25, marking an 84.32% year-on-year increase. It is 16,891 crore rupees. Next is which company launched two new fund offers in Feb 25, including the Nifty Total Market ETF and Nifty Total Market Index Fund to monitor the performance of Nifty Total Market Total Return Index. So, which company launched them? It was launched by Angel One Asset Management Company. Next, identify the organization that recently granted a third-party application provider license, that is TPAP license, to Rediff.com India for their digital payment platform Rediff Pay. So, what is the organization that granted this TPAP license? It is National Payment Corporation of India, NPCI. Next, in Feb, RBI imposed a monetary penalty of 27.3 lakh rupees. It was on Federal Bank for not complying with the RBI's direction on interest rate deposits and opening saving deposit accounts for ineligible entities. Next, identify the digital platform that was recently launched by the SEBI to help investors track and reclaim inactive and unclaimed mutual fund portfolios. It is Mitra, right? Take a note of this. This is the name of the platform that was launched, a digital platform where the investors can go and reclaim the inactive or unclaimed mutual fund portfolios. Next, which of the following was recently granted approval by RBI to provide pre-sanctioned credit lines through the UPI? It is your which of the following has granted approval? So it was small finance banks, right? They were granted approval by RBI to provide pre-sanctioned credit lines through UPI. Next, which first of the kind feature was recently launched by Axis Bank, enabling the customers to open them via their mobile application, right? It is your fixed deposit feature that has been bought by them. Next, identify the company that recently received the approval from RBI to operate as an online payment aggregator. So it is your EasyBiz Private Limited. They recently got the approval from RBI to operate as an online payment aggregator. Next, name the hydroelectric project in Jammu and Kashmir that received 2,147.51 crore rupees term loan from REC Limited in collaboration with Chenab Valley Power Project Limited for the development and construction. It is which dam? It is Pakul Dam. Next, mention the organization that recently launched India's first dedicated platform related party transaction portal to monitor and analyze the RPTs and enhance transparency and governance in the corporate India. It is SEBI, Securities and Exchange Board of India. Next, in Feb, Dash received the restrictions from RBI to issue new loans and suspended deposits withdrawals due to the concerns about the financial position. It is New India Cooperative Bank Limited. They have received the restrictions from RBI to issue new loans and suspended deposits withdrawals due to the concerns about their financial portfolios. Next, identify the bank on which the RBI lifted restrictions in February, allowing it to onboard new customers digitally and issue the new credit cards. So, which is that bank? It is Kotak Mahindra Bank Limited. Next, Zulia Investment Private Limited. They recently received the approval from RBI to raise their stake to 7% in AU Small Finance Bank. Next,
Name the organization that invested 850 crore rupees in India's first sustainability linked bond in the road sector in Feb 25 issued by Cube Highways Trust. So name that organization. It is your International Finance Corporation IFC. This is an arm of World Bank only. Next, mention the country that recently secured $300 million line of credit from Export and Import Bank of India for purchasing high-speed boats and offshore patrol vessels. It is Vietnam. Next, which fintech infrastructure platform introduced India's first fully compliant self-hosted central KYC solution, Know Your Customer solution? It is Decentro Tech Private Limited. Next, name the new digital service launched by South Indian Bank in Feb 25 which allow the individuals to open fixed deposits without saving account. It is SIB Quick Fixed Deposit. Next, identify the initiative that was introduced by Insurance Regulatory and Development Authority of India during the 9th edition of Bima Manthan to enhance accessibility, affordability and efficiency of the insurance services in India. That is your Bima Trinity. Next, when will the SEBI new disclosure rule for related party transactions come into effect from? So SEBI's these news for the related party transactions will be coming into effect from 1st of April 2025. Next, identify the digital service platform launched by LIC in Feb 25 to empower its agents and sales associates. It is One Man Office. Next, what is the denomination of the commemorative coin released by Karnataka Bank Limited on its 101st Founders Day in Feb 2025? It is 100 rupees of commemorative coin. Next, name the new payment mechanism introduced by IRDAI in Feb 25 allowing one-time payment or one-time mandate on UPI for insurance companies. So name that payment mechanism. It is Bima application supported by blocked accounts. That is Bima ASBA. Next, which Indian private sector bank has launched the Prospera non-resident external saving account for non-resident Indians, persons of Indian origin and overseas citizens of India in Feb 25? So which is that Indian private sector bank? It is your Federal Bank. Next, according to RBI's data, outward remittance under the liberalized remittance scheme declined by 10.15% year on year to what amount during the 9 months of FY25? So it is to $22.82 billion. Next, Department of Horticulture and Food Processing under the government of Uttarakhand signed the records of discussions for a 4-year technical cooperation project in Feb 25 with whom it was with the Japan International Cooperation Agency, that is JICA, to enhance the horticulture production. Students, let's discuss some one-liners. Let's start with national news. India, Mauritius, they have signed 8 MOUs to bolster strategic economic relations. Then India and Chile's first joint working group meeting on agriculture was held recently. PM Modi handed over the overseas citizen card to Mauritius counterpart. Then government launched $1 billion fund for the creators economy ahead of the Waves 25. Then Patel inaugurated the Water Sustainability Conference 2025 and PB Shabd, that is a free subscription, has been extended till 2026 to support the media organizations. Next thing is the 10th edition of the Raisina Dialogue held in New Delhi, inaugurated by PM Modi. Then Fit India Carnival held in New Delhi, inaugurated by Mansukh Mandviya ji. And CCI has approved the acquisition of Uprising Science Private Limited by Hindustan Unilever Limited, that is HUL. Then Meghalaya inaugurated the first scientific coal mine after nearly a decade-long ban on that. Next is banking and finance. Valuetics Reinsurance set to become India's first private reinsurer. Then India to become the world's third largest economy by 2028 as per the data released by Morgan Stanley. We will be surpassing whom? We will be surpassing Germany. Then Yes Bank launches seamless GST payment facility for businesses and individuals. Infibeam has partnered with Sutex Cooperative Bank for enhancing net banking facility. Standard Chartered has raised €1 billion via first social bond. Then Piramal Finance and Punjab and Sindh Bank, they have joined hand to expand the credit access to the MSMEs.
Then Satya Micro Capital, they have unveiled the bold vision to empower 10 million households by 2030. And HDFC Bank, they are now accepting deposits under Senior Citizen Savings Scheme. Next is wholesale price inflation, that is WPI. It has risen by 38% in the month of Feb 2025. Next is appointments and resignation. Shiv Kumar Kalyanaram assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then I repeat, Shiv Kumar Kalyanaram, right, assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then Stuart Young to be sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago. Then Tractors and Farm Equipments Limited, that is TAFE, has been appointed as the Lakshmi Venue as their new chairman. Then Vikas Koshal takes charge as the HPCL chairman and managing director, who has been appointed as new MD and CEO of Bajaj Auto, Rajiv Bajaj. Then RBI has named Indranil Bhattacharya as the new executive director. And Mithili Balasubramaniam named the interim managing director and CEO of Eldevis ARC, that is your asset reconstruction company. Next is awards. RBI awarded Digital Transformation Award 2025 for digital initiatives. Then Bengaluru Airport has won the Air Service Quality Award for the third year consecutively. Next is hydrologist Gunter Bloschel has won the 2025 Stockholm Water Prize. Sustainable Airy Silk from Northeast secure the global recognition with Ecotex certification that is given by the country Germany. Next is Vetan sculpture Ram Sutar chosen for Maharashtra Bhushan Award 2024. Next is related to sports. Jharkhand crowned 15th Hockey India Senior Women's National Championship. Right? So 15th edition of Hockey India Senior Women National Championship. Who is it? Jharkhand. Then India Masters has beaten West Indies Masters by 6 wickets to clinch the International Masters League T20 title. Then Kabaddi World Cup 2025 began in England and India concluded Special Olympics Winter Games with 33 medals. IOC board has approved boxing for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games and India has secured 33 medals at the Special Olympic Winter Games 2025. Australian Grand Prix 25 was held and McLaren's Lando Norris has won the F1 season opener and India to host the 11th Asian Swimming Championship in Ahmedabad. So these were your important one-liner, students. Now let's move to some other MCQ questions. Next, students, is our homework section. First question. Tell me recently, when do we observe National Ordnance Factories Day? Second question. Tell me, when do we observe UN French Language Day, as well as along with this give me how many official UN languages are there and when their days are celebrative of each. Third question, which country will be hosting the 11th edition of the Asian Swimming Championship and where this will be hosted. Fourth question, who won the Australian Grand Prix? Name that player and the country and the company he belongs for, right? And fifth question, Kabaddi World Cup is being hosted by which country? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 30 और 31 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की। देन हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए, 165 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड एंड एक और डिवाइस के लिए। देन 14th एडिशन ऑफ इंडियन रशियन नेवल एक्सरसाइज इंदिरा की बात करेंगे एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको रिटेन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसी के अलावा देयर आर मेनी मोर न्यूज स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below.
So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. तो चलिए स्टूडेंट्स, नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं. अभी हम बात करेंगे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन. 2020 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था. इसका एम था कि हम कैसे टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो कर सकें. राइट, टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो करने का मेन एम था, सस्टेनेबली ग्रो करने का एम था. राइट, कैसे टेक्सटाइल में हम बेटर रिसर्च कर सकें, मार्केट्स ग्रोथ ला सकें, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर सकें. राइट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था. एंड अभी इसके इस साल 5 साल पूरे हो गए हैं. करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस. इसके ऊपर फोकस था रिसर्च एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट. इन सारी चीज़ों के ऊपर इस मिशन के अंदर ध्यान दिया गया था. एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, विद अ 3.9% शेयर इन द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट. एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंडिया के GDP के, एंड 10% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं. 62,700 करोड़ रुपीस के ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. पहला है फॉर द सप्लाई ऑफ 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड. राइट, प्रचंड हेलीकॉप्टर को सप्लाई करने के लिए 156 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे. करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस. फिर इसी के अलावा यहाँ पे 66 तो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के पास एंड 90 जाएंगे आर्मी के पास. करेक्ट, एंड फिर इनकी मेंटेनेंस भी यहाँ पे की जाएगी. इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे. करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. फिर नेक्स्ट है 14th एडिशन ऑफ इंडियन रशियन नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंदिरा. अब देखो, कभी भी ऐसी कोई एक्सरसाइज आए ना, उससे 2-3 चीज़ें उससे रिलेटेड याद रखना. पहली, कौन सा एडिशन है? 14th एडिशन हमें देखने को मिला. कहाँ पर देखने को मिला 14th एडिशन? तो ये चेन्नई में ये एक्सरसाइज हुई हमारी, चेन्नई तमिलनाडु में. राइट, देन क्या नाम रहेगा? इंदिरा एक्सरसाइज का नाम रहेगा. देन ये 2 फेजेस में हुई थी, हार्बर फेज एंड सी फेज. जो 13th एडिशन था एक्सरसाइज का, वो कहाँ पर हुआ था? वो बे ऑफ बंगाल में हुआ था. फिर इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया एंड रशिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो ये याद रखेंगे, रशिया की तरफ से था पेचंगा एंड रेजकई, ये 2 थे रशिया की तरफ से. देन इंडिया की तरफ से INS राणा एंड INS कूथर, इन दोनों का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला. मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिटेन किया स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट को फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26. टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रखे गए. जैसे देखें, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट में 4%, 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में 6.9, 2 साल के लिए 7, 3 साल के 7.1, 5 के लिए 7.5 एंड 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट में 6.7%. किसान विकास पात्रा के लिए 7.5%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2%. ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. देन नीति आयोग का ही आम है फ्रंटियर टेक हब. इन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलके एंड AICTE के साथ मिलके लॉन्च किया DX एज फॉर MSME डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे क्या किया? ये DX एज लॉन्च किया गया है. इसका एम क्या रहेगा? DX एज है डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव. इसका एम है कि MSMEs को जो भी डिजिटल टूल्स की रिक्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए वो प्रोवाइड कराई जा सके. प्रॉपर एक इकोसिस्टम बनाया जा सके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का. देन इससे क्या होगा? उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा, वो अपने रिवेन्यू को ट्रैक कर सकेंगे एंड ग्लोबली जो बाकी इस सेक्टर में, उन सेक्टर में जो भी बिजनेसेस होंगे, MSMEs होंगे, उनके साथ वो compete कर सकेंगे. राइट, तो इसीलिए ये DX एज लॉन्च किया गया है MSME का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. फिर नीति आयोग ने लॉन्च किए 2nd एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली फॉर द 2nd क्वार्टर ऑफ FY25. तो ये 2nd एडिशन रहेगा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का. राइट, इसमें बताया गया कि इंडिया का जो टोटल ट्रेड है इट ग्रू बाय 5.67%.
राइट टू $839 बिलियन, एंड इस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और इस साल में देखें तो 5.67 का ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखे 5.23% से टू $395 बिलियन, वहीं पे इंपोर्ट भी बढ़ते हुए दिखे टू 6.07% टू $445 बिलियन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का ऑलमोस्ट $50 बिलियन का, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एक और चीज़, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, ये इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन आर्मी। इन्होंने प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट करा भी, राइट। ये एक हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन टेरेन एक्सरसाइज है जहाँ पे इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनकी पार्टनरशिप से ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया इन अरुणाचल प्रदेश, हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न कमांड एक्सरसाइज की निगरानी में ये एक्सरसाइज हुई थी। फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। सेबी ने इशू की नई गाइडलाइंस फॉर इंट्राडे इंडेक्स डेरिवेटिव मॉनिटरिंग इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अब देखो इससे होगा क्या, पहले तो बात यहाँ पे सेबी ने क्लैरिफाई किया कि कोई पेनल्टीज इंपोज नहीं की जाएगी अगर जो एग्जिस्टिंग पोजीशन की लिमिट है वो ब्रीच हो जाती है। लेकिन ये लिमिट्स क्या है पहले देखते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस के लिए जो लिमिट सेट की गई है वो है 500 करोड़ रुपए एंड 1500 करोड़ रुपए ग्रॉस। वहीं पे इंट्राडे लिमिट के लिए 1000 करोड़ रुपए नेट एंड 2500 करोड़ रुपए ग्रॉस। वहीं पे अगर इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है, राइट, ये तो था फ्यूचर इंडेक्स के ऑप्शंस। अगर इंडेक्स के फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना है किसी भी कंपनी को तो उसकी लिमिट 500 से बढ़ा के 1500 करोड़ कर दी गई है एंड जो इंट्राडे लिमिट है उसको बढ़ा के 2500 करोड़ रुपए कर दिया गया, राइट। अभी इन पे कोई पेनल्टी लगेगी नहीं अगर यहाँ पे लिमिट ब्रीच होती है बाय कंपनीज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, आरबीआई ने अलाउ किया स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स इन रेपो ऑपरेशंस। आई रिपीट, स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स, राइट, ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन ऑल रेपो ऑपरेशंस अक्रॉस टेन्योर्स। ये रिमूव करेंगे प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन जो लिमिट कर देती थी द रोल टू ओवरनाइट लिक्विडिटी मैनेजमेंट। देखो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं इंडिया में लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए इवन 8 लाख करोड़ रुपए का इंडिया ने लोन भी लिया। क्या बता सकते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन से या किस कंट्री से इंडिया ने इस अमाउंट का लोन लिया है ताकि इंडिया की मार्केट्स में लिक्विडिटी बनी रह सके, राइट। तो ओवरनाइट लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे ये प्राइमरी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को अलाउ कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा इन रेपो ऑपरेशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने ग्रांट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू आस्क ग्रुप ताकि ये म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस कर सकें या फिर म्यूचुअल फंड का अपना बिजनेस यहाँ पे लॉन्च कर सकें। आस्क ग्रुप ये बैक्ड बाय है ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन। मूविंग ऑन, देन मोबीविक, इन्होंने अपनी खुद की एक सब्सिडरी लॉन्च की है, मोबीविक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये एक होली ऑन यूनिट रहेगी जो कि स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस करेगी, जो कि आपके स्टॉक्स में, आपकी सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स में, इन सब में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, एसबीआई के चेयरमैन CS सेठी जी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, करेक्ट। एंड FY 25-26 के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। ये सक्सीड किनको करेंगे, मातम वेंकटा राव को ये यहाँ पे सक्सीड करेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, SRMB स्टील, ये एक स्टील की कंपनी है, इन्होंने अपॉइंट किया रोहित शर्मा को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी एंड सौरव गांगुली को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जा चुका है, राइट। कपिल देव को अपॉइंट किया जा चुका है, नॉट सौरव गांगुली, कपिल देव एंड महेंद्र सिंह धोनी, एंड नाउ रोहित शर्मा को भी यहाँ पे इनका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अंबुज चंदना, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप एट DBS बैंक इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि DBS बैंक इंडिया के MD एंड हेड ऑफ कंज्यूमर कौन अपॉइंट किए गए हैं, अंबुज चंदना। ये सक्सीड करेंगे प्रशांत जोशी को। नेक्स्ट इज एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, तो अभी औथम इन्वेस्टमेंट, राइट, ये एक मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड NBFC है, इनको अप्रूवल मिला RBI से कि ये सिडबी की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं 260 करोड़ रुपए के लिए, एंड 260 करोड़ रुपए में ये 79.28% शेयर यहाँ पे इनका स्टेक एक्वायर करेंगे। सो टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इंडियन आर्मी ने भी सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिया का पहला कामिकाजे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स विद कामिकाजे एंटी टैंक म्यूनिशंस। देखो ये जो ड्रोन है ना, ये क्या है, बेसिकली एंटी टैंक ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स को एंटी टैंक ड्रोन्स है, मतलब टैंक्स को ये ख़त्म कर सकते हैं, राइट। कहीं पे इनको ब्लास्ट करना है तो वहाँ पे जाके ब्लास्ट कर सकते हैं, राइट। एंड फर्स्ट पर्सन व्यू होता है कि आप बेसिकली कोई व्यक्ति इनको अपने
रूम में बैठ के, ऑफिस में बैठ के वहाँ से इसको ऑपरेट कर पाएगा इजीली, राइट। तो ये इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया है पहला कामिकाजे ड्रोन। 1.4 लाख रुपीस का ये ईच ड्रोन रहेगा एंड ये कामिकाजे एंटी टैक म्यूनिशंस ड्रोन्स रहेंगे, इसलिए मार्क करेंगे इसको। कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया? पंजाब में पठानकोट में इसको टेस्ट किया गया था एंड यहाँ पे इनिशियली 100 से भी ज़्यादा ड्रोन्स डिलीवर किए जाएंगे टू द इंडियन आर्मी, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसरो ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया सेमी क्रायोजेनिक इंजन एंड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन थ्रस्टर। इससे क्या होगा? बेटर थ्रस्ट मिलेगा हमें, तो हमारा जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाएगा, हम बेटर पेलोड कैरी कर पाएंगे, राइट। इससे क्या होगा? यहाँ पे जो लाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, राइट, इसका पेलोड कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा एंड ऑल। ये जो इंजन है ये है SE2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन, राइट। ये नॉन टॉक्सिक ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता है फॉर फ्यूल। नेक्स्ट आ जाते हैं BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया इंडिजीनियसली डिजाइन 12x12 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स फॉर डिफेंस। 12x12 हो गया बेसिकली आपके, इसमें आप ये मान के चलो ये 12x12 आपके व्हीकल्स होते हैं, ये ठीक है, व्हील्स होते हैं, राइट। तो BEML ने ये 12x12 का हाई मोबिलिटी व्हीकल लॉन्च किया है डिफेंस सेक्टर के लिए। इसको डेवलप किया गया है डेवलप फॉर व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि यूनिट है ऑफ DRDO, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। वर्ल्ड पियानो डे 29 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली पियानो को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 88th डे ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि इसमें 88 कीज़ होती हैं पियानो में। जनरली वो 29 या 28 ऑफ मार्च को फॉल करता है, बेस्ड ऑन ये लीप ईयर है फरवरी में या नहीं है, ठीक। अगर हम 2024 की बात करें, 2024 में 24 मार्च था, 2026 में ये 29 मार्च रहेगा एंड इस बार हमने इस साल 10वीं एडिशन इसका ऑब्जर्व किया, 10वीं एनिवर्सरी। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, 30 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जा सके, उसको हम सस्टेनेबली कंजप्ट कर सकें न्यू प्रोडक्ट को एंड वेस्ट कम से कम हो, तो पॉल्यूशन के बारे में, वेस्ट पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई है कि हमें कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करना चाहिए, कम से कम वेस्ट क्रिएट करना चाहिए। इसी के बारे में डे अवेयर किया आता है 30 मार्च को, राइट। इसको ज़ीरो वेस्ट डे के नाम से भी जानते हैं। तीसरा एडिशन रहेगा इसका एंड पहली बार इसको 2000 पहली जो फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी जो थीम रहेगी वो है टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल, राइट। एंड UNEP के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नायरोबी कीनिया में UNEP का हेडक्वार्टर रहेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं अपने रिवीजन पार्ट पर, देन चलेंगे कुछ होमवर्क सेक्शन पे। नेक्स्ट, हाउ मच लोन डिड क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया फ्रॉम IFC, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का आर्म है, ताकि जो फाइनेंशियल एक्सेस है माइक्रो एंटरप्राइज तक वो बढ़ा सके, मतलब ज़्यादा पैसे का एक्सेस उन तक पहुंचा सके, तो वो है $50 मिलियन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया RBI के द्वारा जनवरी 2025 में, टू इवेल्युएट ऑन टैप एप्लीकेशन अंडर द थीम ऑफ रिटेल पेमेंट्स, मतलब आप टैप करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या होता है? बेसिकली एक इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई भी सर्विस एक जनरल पब्लिक तक लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है उस इन्वायरमेंट में, वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है। नेक्स्ट, इन फेब सेबी ने ग्रांट किया रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर्स लाइसेंस, किनको? मेकिंग इट द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर लेड कंपनी टू रिसीव द लाइसेंस, तो वो है द 1% क्लब, शरण हेगड़े की ये कंपनी रहेगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक्सटेंड किया 200 करोड़ रुपीज लोन टू ग्रामर्सी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 120 मेगावाट डाटा सेंटर महाराष्ट्र में। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक्सटेंड किया 200 करोड़ रुपीज़ का लोन, वो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID। नेक्स्ट, इन फैब बीकॉन, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया बिल पे, जो कि एक सर्विस है जो अलाउ करेगी नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, जो कहाँ पर है, जो कनाडा में है, टू पे बिल्स डायरेक्टली इन इंडिया थ्रू बीकन मोबाइल एप्लीकेशन। तो मतलब कनाडा से बैठ के इंडिया के बिल्स वो पे कर सकेंगे। इसी के अलावा सिंगापुर में भी UPI यूज़ कर पाएंगे इंडियन ट्रैवलर्स, एंड इसके लिए सिंगापुर के हिट पे के साथ यहाँ पे टाई अप किया है किन्होंने? इंडिया के NIPL ने, जो कि है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने। नेक्स्ट, RBI ने अभी रीवैल्यूएट किया था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 465.33, रिफ्लेक्टिंग एन 11.11 ईयर ऑन ईयर इंक्रीज एज ऑफ September 24। नेक्स्ट,
What are the new norms introduced by SEBI in Feb 25 to regulate the algorithmic trading for retail investors? ये कब से लागू हो जाएगी एल्गो ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? 1 अगस्त से. Next, which of the following states recently secured 2,424 crore rupees from World Bank to improve the living standards? तो केरला के लिए यहाँ पे अप्रूव किया गया है ये लोन. नेक्स्ट, किस बैंक ने लॉन्च किया एक्सक्लूसिव सेट ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन्स इन फेब 2025? तो वो है IDFC फर्स्ट बैंक. नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि लॉन्च किया गया बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, डिजाइंड एक्सक्लूसिवली टू कैटर द इवॉल्विंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीमेन. तो उसका नाम है हेरिजॉन केयर. नेक्स्ट, हाउ मच नेट प्रॉफिट दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड तीसरे क्वार्टर में ऑफ FY25 मेकिंग एन इंक्रीज ऑफ 84.32%. तो कितना प्रॉफिट SBI ने यहाँ पे रजिस्टर किया? वो है 16,891 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे शो किया. नेक्स्ट, विच कंपनी इन्होंने लॉन्च किया न्यू फंड ऑफर्स इन फेब इंक्लूडिंग निफ्टी टोटल मार्केट ETF एंड निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी टोटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स? तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ग्रांट किया एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर TPAP लाइसेंस rediff.com को इनकी पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए रेडिफ पे के लिए. तो किन्होंने इनको ये लाइसेंस दिया? NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको ये ग्रांट किया गया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस. नेक्स्ट, इन फरवरी RBI ने इम्पोज करी मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 27.3 लाख रुपीज़ किस पर? फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द RBI's डायरेक्शन ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड ओपनिंग सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स फॉर इनएलिजिबल एंटिटीज. तो किन पे ये पेनल्टी इम्पोज की गई है? फेडरल बैंक पे इम्पोज की गई है 27.3 लाख रुपए की. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय SEBI टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रैक एंड रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज. तो ये मित्रा है इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम. Next, which of the following was recently granted approval by RBI to provide pre-sanction credit lines through UPI? तो वो है Small Finance Bank. Next, which of the following of its kind feature recently launched by Axis Bank enabling customers to open them via mobile application? तो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे लॉन्च किया गया जो कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन से ही यहाँ पे बुक कर सकते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर. तो किनको मिल गया ये अप्रूवल? वो है ईजीबिज प्राइवेट लिमिटेड. ये अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम कर सकेंगे. नेक्स्ट, नेम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहेगा जिन्होंने रिसीव किया 2,147.51 करोड़ रुपीज़ का टर्म लोन फ्रॉम REC लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड फॉर देयर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. तो वो पाकल डैम के लिए यहाँ पे किया गया है. नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल जो मॉनिटर करेगा, एनालाइज करेगा RPTs को, एनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस कॉर्पोरेट इंडिया में. तो किसके द्वारा किया गया है ये? मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन, वो है SEBI. नेक्स्ट, इन फरवरी डैश इन्होंने रिसीव किया रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम RBI टू इशू न्यू लोन्स एंड सस्पेंडेड डिपॉजिट विड्रॉल्स ड्यू टू द कंसर्न्स अबाउट देयर फाइनेंशियल पोजीशन. तो इन फरवरी न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड इन्होंने रिसीव की रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम RBI. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने ऑन विच RBI लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस, जिन्होंने अभी रिस्ट्रिक्शंस हटा लिया RBI ने. किस बैंक पे से? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड से यहाँ पे इन्होंने जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा लिए. नेक्स्ट, Zulia Investment Private Limited recently received approval from Reserve Bank of India to raise their stake to 7%. किसमें? AU Small Finance Bank में यहाँ पे अपना स्टेक रेज करने की बात की गई. नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इन्वेस्ट किए 850 करोड़ रुपए इन इंडिया की पहले सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में इन द रोड सेक्टर इन फैब इशूड बाय क्यूब हाईवेज ट्रस्ट. राइट, तो किसके द्वारा ये इन्वेस्ट किए गए हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि एक वर्ल्ड बैंक का आर्म ही रहेगा. नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली सिक्योर किया $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एक्सिम बैंक फॉर परचेजिंग हाई स्पीड बोट्स एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स. तो वियतनाम के द्वारा यहाँ पे सिक्योर किया गया ये $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट, किस फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फुल्ली कंप्लेंट सेल्फ होस्टेड KYC सॉल्यूशंस को? तो ये है डिसेंट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड. बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म रहेगा.
नेक्स्ट, नेम द न्यू डिजिटल सर्विस लॉन्च की गई साउथ इंडियन बैंक के द्वारा फरवरी 2025 में, जो अलाउ करेगी इंडिविजुअल्स को टू ओपन फिक्स डिपॉजिट विदाउट अ सेविंग अकाउंट। तो ये है SIB क्विक फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव जो इंट्रोड्यूस किया गया बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 9th एडिशन ऑफ बीमा मंथन, जो एनहेंस करेगा असेसिबिलिटी को, अफोर्डेबिलिटी को एंड एफिशिएंसी को इन द इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो ये है बीमा ट्रिनिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन विल सेबी, इन्होंने न्यू डिस्क्लोजर रूल्स लॉन्च किए फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये लागू होंगे। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए जो नए रूल हैं 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय LIC इन फेब 2025, जो एम्पावर करेगा अपने एजेंट्स को एंड सेल्स एसोसिएट्स को। तो वो है वन मैन ऑफिस। नेक्स्ट, उस डिनोमिनेशन का नाम बताओ ऑफ द कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च बाय कर्नाटका बैंक लिमिटेड ऑन 101st फाउंडर्स डे इन फेब 2025। तो वो है 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन। नेक्स्ट, नेम द न्यू पेमेंट मैकेनिज्म जो कि इंट्रोड्यूस किया गया IRDAI के द्वारा, अलाउइंग वन टाइम मैंडेट ऑन UPI फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। तो वो है बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट्स, तो बीमा ASBA। नेक्स्ट, विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक इन्होंने लॉन्च किया प्रॉस्पेरा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया फरवरी 2025 में। तो वो है फेडरल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI डाटा, आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर द लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम डिक्लाइन बाय 10.15% ईयर ऑन ईयर टू व्हाट अमाउंट ड्यूरिंग द 9 months ऑफ FY25। तो वो है $22.82 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग द गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इन्होंने एक रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशन साइन किया है फॉर 4-year टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट इन फेब 2025। किसके साथ ये किया गया? जीका के साथ, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, टू एनहेंस द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। Students, let's discuss some one-liners. Let's start with national news. India, Mauritius, they have signed 8 MOUs to bolster strategic economic relations. Then India and Chile's first joint working group meeting on agriculture was held recently. PM Modi handed over the overseas citizen card to Mauritius counterpart. Then government launched $1 billion fund for the creators economy ahead of the Waves 25. Then Patel inaugurated the Water Sustainability Conference 2025. And PB Shabd, that is a free subscription, has been extended till 2026 to support the media organizations. Next thing is the 10th edition of the Raisina Dialogue held in New Delhi, inaugurated by PM Modi. Then Fit India Carnival held in New Delhi, inaugurated by Mansukh Mandviya ji. And CCI has approved the acquisition of Uprising Science Private Limited by Hindustan Unilever Limited, that is HUL. Then Meghalaya inaugurated the first scientific coal mine after nearly a decade-long ban on that. Next is banking and finance. Valuetics Reinsurance set to become India's first private reinsurer. Then India to become the world's third largest economy by 2028 as per the data released by Morgan Stanley. We will be surpassing whom? We will be surpassing Germany. Then Yes Bank launches seamless GST payment facility for businesses and individuals. Infibeam has partnered with Sutex Cooperative Bank for enhancing net banking facility. Standard Chartered has raised €1 billion via first social bond. Then Piramal Finance and Punjab and Sindh Bank, they have joined hand to expand the credit access to the MSMEs. Then Satyam Micro Capital, they have unveiled the bold vision to empower 10 million households by 2030. And HDFC Bank, they are now accepting deposits under Senior Citizen Savings Scheme. Next is wholesale price inflation, that is WPI. It has risen by 38% in the month of Feb 2025. Next is appointments and resignation. Shiv Kumar Kalyanaram assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then I repeat, Shiv Kumar Kalyanaraman, right, assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then Stuart Young to be sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago. Then Tractors and Farm Equipments Limited, that is TAFE, has been appointed as the Lakshmi Venu as their new chairman. Then Vikas Koshal takes charge as the HPCL chairman and managing director, who has been appointed as
New MD and CEO of Bajaj Auto, Rajiv Bajaj ji. Then RBI has named Indranil Bhattacharya as the new executive director. And Mithili Balasubramaniam named the interim managing director and CEO of Eldevez ARC, that is your asset reconstruction company. Next is awards. RBI awarded Digital Transformation Award 2025 for digital initiatives. Then Bengaluru Airport has won the Air Service Quality Award for the third year consecutively. Next is hydrologist Gunter Bloschel has won the 2025 Stockholm Water Prize. Sustainable Airy Silk from Northeast secure the global recognition with Ecotex certification that is given by the country Germany. Next is Vetan sculpture Ram Sutar chosen for Maharashtra Bhushan Award 2024. Next is related to sports. Jharkhand crowned 15th Hockey India Senior Women's National Championship. Right? So 15th edition of Hockey India Senior Women National Championship. Who is it? Jharkhand. Then India Masters has beaten West Indies Masters by 6 wickets to clinch the International Masters League T20 title. Then Kabaddi World Cup 2025 began in England and India concluded Special Olympics Winter Games with 33 medals. IOC board has approved boxing for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games and India has secured 33 medals at the Special Olympic Winter Games 2025. Australian Grand Prix 25 was held and McLaren's Lando Norris has won the F1 season opener and India to host the 11th Asian Swimming Championship in Ahmedabad. So these were your important one-liner students. Now let's move to some other MCQ questions. Next students is our homework section. First question. Tell me recently when do we observe National Ordnance Factories Day? Second question. Tell me when do we observe UN French Language Day, as well as along with this give me how many official UN languages are there and when their days are celebrative of each. Third question. Which country will be hosting the 11th edition of the Asian Swimming Championship and where this will be hosted? Fourth question. Who won the Australian Grand Prix? Name that player and the country and the company he belongs for. Right? And fifth question. Kabaddi World Cup is being hosted by which country? So these are your 5 homework questions students and I need to see maximum participation from all the students watching this video.